Assalamualaikum and welcome to Recipe Lounge, and thank you so much for watching my videos. And today's recipe is potato in coconut milk. So let's see what we need. We have taken one small green chili, which we have chopped in 4 pieces. We also need red chilies, dried red chilies, 3 we have taken. Mustard seeds we have taken 1 teaspoon, 1 bay leaf, teaspoon of half a teaspoon of हल्दी, और कोकोनट हमें चाहिए होगा कोकोनट ऑयल जो कि हमने 1 टेबलस्पून लिया है। इसके साथ ही हमने कोकोनट मिल्क लिया 1 टेन। We are also boiling potatoes. We have taken 4 medium-sized potatoes, cut them and peel them. Now we're boiling them. If you peel and the potatoes first, then it doesn't take them long to boil. तो जो आज की रेसिपी है, हमने कोकोनट मिल्क में पोटैटो सूप बनानी है, तो जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट शेयर दिखा दिए हैं। तो अब हम जब इसमें डालेंगे तब भी दिखाएंगे। तो हमने 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोस लिए हैं जिनको हम बॉईल कर रहे हैं। तो इस साइज़ के पोटैटोस हमने काटे हैं और तकरीबन इसको 5 मिनट लगने चाहिए बॉईल होने में। So it should only take 5 minutes to boil. Let's see. I think the potatoes are done. We can just test them. Yeah. So I'm just gonna drain the water out. तो पानी हम निकाल देंगे, potatoes cooked हो गए। So yes, in the same pan we're gonna add the coconut oil. Once that's melted on a low heat, we're going to put mustard seeds in, bay leaf, हल्दी भी हम डाल दें, थोड़ा सा इसे मिक्स कर दें और साथ ही हम ये ग्रीन चिलीज डाल देंगे और ये रेड चिलीज भी। सॉल्ट वैसे इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, मगर अगर कुछ लोग ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं तो आप थोड़ा सा डाल लीजिएगा, मगर मैंने नहीं डालना। तो थोड़ा सा ये भुन जाए तकरीबन 1 मिनट के लिए, तो फिर इसमें हम कोकोनट मिल्क डाल देंगे जी। So as you can see, it's ready. The chilies are done, otherwise they will burn. So we're going to add the coconut milk like so. And now we're going to add the potatoes. After 1 boil, just add the potatoes. तो 1 boil के बाद आप potatoes डाल दें। To 1 or 2 minutes, let it boil for about 1 or 2 minutes. और 1-2 minutes के लिए इसे boil होने दें, and then it's ready. We'll show you after serving. This is a really easy recipe. It's really nice as a starter or just additional to any meal. Do try this and let me know how you get on. I mean, this is fine for us, but if you want it slightly thicker, then just go ahead and cook for another few minutes. There it is, potato cooked in the coconut milk soup. So yes, do try this. तो जी आप सब ज़रूर try कीजिएगा. Let me know how you get on. तो thank you so much for watching. Until next time, Allah Hafiz.